This August morning, we have gathered on a very important discussion and arranged by CSR Foundation. On the dais, Sri Dindayal Agarwal, Chairman CSR Research Foundation, Dr. Pravesh Mehra, भाई तालियां तो बजाइए ना, श्री पंकज सोम चतुर्वेदी, नवीन सिन्हा जी शायद आने वाले हैं, अविनाश मट्टा, फॉर्मर डायरेक्टर अकाउंट, प्रमोद महेश्वरी, फॉर्मर सेक्रेटरी NIRC of the, and RK गुप्ता, हाँ नमस्कार करिए एक बार, and YK गुप्ता जी, KM गुप्ता जी, एक बार आप एक बार खड़े होकर नमस्कार कर दीजिए। गुप्ता जी कहाँ हैं? हाँ हाँ, तालियां बजाइए भाई जोर से। Now, today's subject is financial inclusion. That's the way to connect the people, and by connecting the people, we can make the prosperity not only to the planet, but also to the universe. It's just a look, this is like a wheel. If you can rotate one, it will rotate the other. If you can take all the peoples, it will take the planet, and it will do the prosperity of the whole of the universe. Yes, sir, poverty is the worst form of violence. Poverty disrupts peace. Poverty in a family disrupts the peace between the husband and wife, in the family, in his associated villages. So naturally, it needs to include the whole of the people, whole of the poor people, which is in our constitution, that is an inclusiveness. सबको लेके चलना चाहिए। तो ये हमारे महात्मा गांधी ने बताए हैं। देखिए, फिनेंशियल इंक्लूजन मीन्स किसी को अकाउंट होना चाहिए। Those from this account, so that he can do transaction and payment, he should have some savings. He may have the capability to take the credit. He should have an insurance for his health, insurance for his property. It will make the prosperity and the peace. And for that, people should need accounts, own accounts. देश में 70 सालों के बाद भी सबको अकाउंट्स नहीं बना था। तो ये financial inclusion, what is the strategy? I have to go first. I can hand over the presentation later on. It is also known to everyone, but needs recapitulation. Whenever we recapitulate something, we can disperse our knowledge to others, other organizations, and you all the people have to do this. Today's workshop, today's seminar is to forward this knowledge to other organizations. There are so many organizations, and I hope you will do all these. There is a revolutionary step was taken by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. That is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. बहुत पुराना है, लेकिन उसको आज भी याद करना है, उसके लिए काम भी करना है. We have to do work for this. Why? Why we have to do work? Because it needs inclusion of all the peoples. Pradhan Mantri
जन धन योजना। आपने देखा उस दिन प्रधानमंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या होता है, वन सेविंग्स अकाउंट, उसमें कोई जिसका कोई बैंक अकाउंट में ही नहीं था उसका अकाउंट बन जाएगा, उसके कोई मिनिमम बैलेंस, ही शुड नॉट, माने ही इज नॉट बाउंड टू कीप मिनिमम बैलेंस। सारे जो डिपॉजिट उसमें हो सकता है और जो ग्रीवेंस, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ये सब भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में what is the benefits, what benefit you can get. Previously it was, the insurance amount was only 1 lakh, but later on it has become increased to 2 lakhs for a poor people, जिसका कुछ नहीं है उसका 2 लाख। कभी तो ऐसा होता है रिचुअल्स का भी कुछ पैसा नहीं, सड़क में एक एक्सीडेंट होकर मर गया तो क्या होता है, उसके बच्चे को क्या होगा, इमीडिएट उसको 2 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन उसको, इसके लिए भी हमको भी मदद करना चाहिए। ही कैन टेक द ओवरड्राफ्ट। आप जानते हैं गांव में सारे लोग, जो किसान लोग, वो मंथली 3%, 5% इतना इंटरेस्ट में कर्जा लेते हैं, तो वो तो बंद हो गया। बंद करा सकते हैं जब हम आज जो ये घर के अंदर जो बताते हैं, इसको एकदम गांव के लोगों को पास ये जानना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए। और ये सारे अमाउंट्स जो मान लीजिए इन अटल ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जो मुद्रा लोन, all these things can be disbursed by this. If you go through the achievement, there is a tremendous achievement. Total 43.94 crore लोगों का अकाउंट्स बन गया, 43.94। तो what should be our work? हमको क्या करना है? हमको करना है वो सारे लोगों को एक भी बैंक अकाउंट जैसे डरमेंट ना हो, इसके लिए करना, इसके लिए प्रचार करना चाहिए। We have to publish what is to be done, whether he has collected the RuPay debit card or not. We can make small papers and that can be distributed by different organizations. We can make format, we can publicize it through our social media, that each Jan Dhan account, प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो अकाउंट्स है, उन सबको रेगुलर उसको डिपॉजिट नहीं तो विथड्रॉ करना चाहिए, so that his account should be live. And RuPay debit card, it is also to be collected. जन धन के यो अकाउंट अभी घर घर में पहुंच गए हैं, और नेक्स्ट, पहले ये एवरी हाउस होल्ड में था, अभी वो दैट हैज बिकम टू everyone. तो today's take home message of CSR Foundation should be, all the Jan Dhan account should be made live. किसी को डरमेंट होने नहीं देना चाहिए। इसके लिए जो करना है, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिसाइज, कोई छोटा पर्ची बटना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, वी हैव टू डू इट. Then if we do these things, that means we are doing work for our country and we are following all the message from our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Now another part I will take. You have taken so many subjects for the discussion. Another is the role of MSME, micro, small and medium entrepreneurs.
Yes, so many directors and bank director, bank high-end officers are present here. But we have to encourage micro, small and medium entrepreneurs. If we see ये एमएसएमई का योगदान हमारे जीडीपी में कैसा है, ये एक बहुत बड़ा योगदान है और इट इज़ अबाउट द एक्सपोर्ट का 40% from MSME sector. And we should have an idea, this is a division, classification between micro, small and medium. We can easily keep it, remember there is a 1, 10 and 50 crores. This is the capital. 1 micro for 1, small 10 and medium is 50. And if you multiply by 5, that will be the turnover. Okay? Bas. Actually, my parliament is. So, naturally, I hope this is a MA for the MSME sectors. The two things. This is a credit deposit ratio. Banker is there, I think so. हाँ, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है अभी, कुछ कारण भी है, एनपीए भी होता है. हाँ, इसके बारे में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड एंड हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी considered in a proper way so that it should not run in negative way and the huge amount of NPA should not be there. We should encourage the MSME sectors and my other slides are there. I hope MSME sectors and Startup India, if we encourage all these and in a very good way, then our workshop and seminar in this regard will be successful. I would like to send you two messages. One is financial inclusion of the poor peoples by Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and it is to be made live, and micro, small and medium investors should be encouraged so that our economic growth would be proper. And especially in the COVID situation, we should keep it in mind. There is a hospitality industry and the tourism industry is a tremendous situation. I will say all of you, those who are able to encourage this industry to revamp again, I hope you will do. Thank you very much. Well.